A very good morning to all of you present over here. A respected Chief Guest, Director Sir, scientist of our own institute CSIR-CIMFR, teachers and dear students. Today we are here to celebrate the curtain raiser ceremony of India International Science Festival. Just 1 or 2 days before, I was just thinking that festival season is over. But we are again here with a new festival, that is Science Festival. And that is actually equally very important because science is the backbone of the growth of a country. So it is our responsibility to spread science and develop enthusiasm towards scientific thinking. IISF, or India International Science Festival, is a platform to celebrate science and scientific achievements of India. It has been started in 2015 and being celebrated every year. It is our uh, proud that this year at the curtain raiser ceremony of IISF at CSIR-CIMFR, we have an eminent science leader, Professor Arvind Chaube sir. So to move ahead with this celebration, with this festival, I would like to request Dr. J.K. Pandey sir and our director sir to accompany our chief guest up to the dais. Thank you, sirs. In Indian tradition, we have tradition to start any celebration with lighting of lamp. So इसी क्रम में मैं अपने मुख्य अतिथि तथा निदेशक महोदय और जेके पांडे सर से अनुरोध करूंगा कि लाइट को लैंप करके इस त्योहार की शुरुआत करें. थैंक यू सर. हमारे यहाँ आए हुए अतिथियों को एक पुस्तक भेंट कर सम्मान करने की एक परंपरा है. इसी क्रम में नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर डायरेक्टर सर to present flower bouquet and book to our chief guest, Professor Arvind Chaube sir. Thank you, sir. Now I would like to request our director, Professor A.K. Misra sir, uh, for his welcome address. Sir, please. Thank you, Dr. Vivek. Pleasant good morning to everyone and a very warm welcome. Honorable Chief Guest of today's function, Professor Arvind Chaubeji, Director, NIT Durgapur, who in spite of his very busy schedule, he has been away for Chhat Puja at his home. And he had to be there back at his institute, but he very happily accepted our invitation and he is there with us. So a very warm welcome to you, sir. All distinguished scientists, our guests
I can see Principal DAV Digwadi, DAV Koilanagar, Mr. Shrivastava ji, and all other respected principals, teachers, students, scholars, and my dear colleagues. Those who are physically present here, and some of our colleagues are present online, and friends from press and media. A pleasant good morning to one and all, and a very warm welcome. Indeed, this is my honor and privilege to address or to have this function called India International Science Festival Curtain Raiser Program. In the past few months, during past few months, we had celebration of various festivals, which started from Tej, and then we had Ganesh Chaturthi, which followed in with Navratri, Dashera, Deepavali, and ultimately culminated with Chhat. So this is another festival. It's Science Festival, India International Science Festival. And this is the 10th of its edition, which will be held at IIT Guwahati. And in the last IASF 2023, we had seen more than 100,000 people visited, 100,000 students visited IASF 2023, which was held at, which was organized by DBT. And this year, this is India International Science Festival will be organized by CSIR, DSIR, along with other departments of the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Department of Space, Department of Atomic Energy, and IIT Guwahati. So this festival, which will be held at IIT Guwahati, is a platform wherein all stakeholders of science and technology, all researchers, scientists, research enthusiasts, students, professors, industries, startups, and the policymakers all will be gathered together, and we will be celebrating the achievements, accolades of science and technology for enhancing, for promoting our economy. So that is what is India International Science Festival. Those students who are attending it first time, some of you might have attended last year, and some of you might be attending it very first time. This is the platform which has been created by or thought by Government of India, wherein all scientific departments will be joining in, along with one society, science society body, Vigyan Bharati, wherein all departments, whatever achievements we have achieved in the last 1 year, will be displayed. We'll be having more than 100 stalls and more than 100,000 students will be visiting, and they will see what India has achieved in terms of space. So in space technology, what have we achieved? What are our accomplishments? And what we intend to achieve in the near future. Like the Gaganyaan must be known to the students by now. What is the mission Gaganyaan? And this year we'll be sending the first female biorobot. उसका नाम क्या है बच्चों पता है? व्योम मित्र.
Vyom means, meaning of Vyom in Sanskrit is space, and Mitra is friend. So the first female robot will be sent by the end of this year, and next year we have planned to send in the human mission to space. That is the one accomplishment. Apart from Chandrayaan, what we had seen in, there will be dedicated pavilion for Department of Space, wherein students can visit, they can interact with the scientists, what are the activities so far as space technology is concerned, and what are the plans as Government of India, और जो हमारी शक्ति है, जो हमारी क्षमता है, वो बच्चों को पता चले, बच्चों के मन में साइंस के प्रति रुझान बढ़े, यह भी एक अभिलाषा है इस कार्यक्रम की. Another one is from Ministry of Earth Sciences, wherein the Deep Ocean Mission is another program, wherein the manned vehicle deep down 6,000 meters, 6 kilometers deep down from surface of the ocean, manned vehicle will be sent in, for which the preparation is going on, indigenously developed. And unmanned we are doing right now, unmanned vehicle exploration deep down to the 6,000 meters we are already doing in. And there is tremendous, vast marine resources available to the country. And this is the high time when science and technological intervention, with the science and technology intervention, we can exploit those resources for the benefit of the people, for the benefit of the society, for the benefit of the country. And that is what you will come to know. So that is what will be presented by Ministry of Earth Sciences. And I forgot, the theme of this year's program is transforming India into a science and technology driven global manufacturing hub. That is what is another impetus given by this IISF 2024 being held at IIT Guwahati, wherein with the help of science and technology, how can we as country become global manufacturing hub? And not only for the capital goods, you might be aware that we produce various metals. We have different positions. We consume capital good, but unfortunately, the kind of momentum which is required to be given for becoming the manufacturing hub of various capital goods. Apart from capital goods, the semiconductor manufacturing facility, which Government of India has already started in, and the scientific departments have taken up a lead. And very soon we will be becoming the manufacturing hub for semiconductors as well. And by doing so, we will be in a position to achieve the dream of Viksit Bharat. And the various programs which will be shown in, there will be a presentation being followed after the inaugural or during the inaugural itself, wherein you will come to know what are the various 24 events have been planned in this IISF 2024. And another important aspect is, so far the various approaches were that we need to bring in Northeast to the mainstream of the country. That is what the government used to focus on. But of late now, they have realized that it is not they need to be brought into the mainstream. Rather, mainstream has to go into the Northeast so that we become part of Northeast, and the kind of development and growth which is happening around in Northeast will be visible to the mainland as well. So that is what is the approach. So everybody across the country, all scientific fraternity, including, starting from the scientists, researchers, your startups, industry, policymakers, the various ministries will be at one platform in Northeast. And we will be celebrating
the development which has taken place in Northeast with the intervention of science and technology. The another aspect is empowering women in science and technology is another theme in this IASF itself. But if the women empowerment in ISTEM, what we call it, or in science and technology, but if any women empowerment need to be talked about, it is we need to learn in from Northeast. If you ever have been to Northeast, you will come to know that early morning, all the shops, all the businesses being run by women, they are the one who are the driving force, prime mover for the economy of the house, economy of the society. And so we have a lot to learn in from Northeast. So that is another focus area for this year. There will be another program wherein one particular day will be dedicated to the students. And these students will be from the village schools, from the rural areas. And these students will be visiting along with their parents or along with their guardians so that they can know what is happening in the country so far as science and technology is concerned. So that the kind of the science, their interest in science is concerned can be further nurtured. And for that, one particular day exclusively will be dedicated, wherein they will be interacting with the scientists, they will be interacting with the research scholars, they will be interacting with the young scientist awardees this year. So they will be called in, and one day will be there for the international scientists. The Nobel laureates have been planned in, they will be visiting in, wherein they can interact directly. They will be getting a platform and opportunity wherein they can interact directly with the eminent scientists, global scientists, and the eminent scientists from the Southeast Asia. That has also been arranged in. Then there will be a dedicated program for CEOs of the startups. As we had seen in the past few years, how startup has grown in the country from barely few hundred numbers, 350 or so. From that number, now it is more than 140,000 startups. So that is the kind of growth which has come up, and these startups are being run by the young professionals, young engineers, young scientists, those who are driving these startups. And if you look up in the past few years, our global innovation index, the country used to appear somewhere in 81 position. And from 81, we have reached, last year we were 40th. And now this year we have marked the position of 39th rank in global innovation index. And this all has happened because of the intervention of science and technology. If you look up the economy of the country, the major driving force is science and more than 25% is directly being contributed by science and technology. And the various industries of agri-food, biotechnology, bioeconomics, chemicals, metals and materials, IT, electronics and semiconductors, heavy engineering and automobiles, pharma and healthcare, textiles and machinery. So these are the various segments which have been planned in, wherein the industry leaders, eminent industry leaders, startups, policymakers, the ministries, and the scientists will be interacting together so that we can really know what way we need to look up for the next year. So when we'll be celebrating it in 2025, what are the various interceptions will be required to further improve on, so that the contribution of science and technology in improving the economy of the country can be looked upon. If you look up, very briefly, I'll talk. I'm not sure about the students who really know what CSIR-CIMFR has done and CSIR as a whole has done. This year on 26th January, there was a tableau on Purple Revolution, when you might have seen on your TV, or those who might have got an opportunity to see the parade at Delhi, Red Fort. 26th January, there was a tableau
which was CSIR tableau, and that was on purple revolution, which is for lavender cultivation and then extraction of essential oil. So our CSIR lab they have developed the technology wherein at barren land and those farmers which are not in a position to make in the crops which will fetch economy to their household. They cultivated lavender, and then with the lavender, the essential oil extraction was there, and so it revolutionized the income of the society and of the farmers. That was one which was being displayed in. Similarly, Namo Lotus, 108 petals. Lotus was being developed at CIMFR, one of the lab of CSIR, which was being offered to Lord Sri Ram at Ayodhya. So that was another one. Then tulips being developed at one of the lab and being offered to the Lord Sri Ram at Ayodhya. That was also being done at one of the lab of CSIR. And in Hansa and Saras, these are the two indigenous projects. Tejas is another project wherein CSIR has immensely contributed for the development of indigenous aircrafts, fighter aircraft as well as the passenger aircrafts. We have a facility wherein all the satellites, all missiles need to get graduated, then only they can really be executed. So these are the various, just to name few. If you look up the CSIR-CIMFR, clean coal technology, we are working on clean coal technology wherein from coal, which is being considered as a dirty fuel, we are making the syngas, and from syngas, we are making the methanol, ethanol, DME. These are the other routes, as well as CO2 being developed in the process will be absorbed, and then from CO2 we'll be developing methanol. Is another lab of CSIR is doing that project. So this is the kind of projects which we are doing in terms of fuel sciences. Similarly, for substitution of imported coking coal, we are working on so that the indigenous available semi-coking and non-coking coal can be converted into coking coal is another technology on which we are working on. Then there are other technologies which are required in mining. We are working on like vision enhancement for foggy weather has been done. Apart from this, very recently, Government of India has decided to ban on all instantaneous detonators which are used in mine or in civil construction from 2025 March. And so there is a requirement of development of electronic permitted detonators to be used in the country, for which we are working on. Already we have done the trials for 3 of the companies, and we have provided the report, and we are working on already we have established the standards wherein these detonators will be tested, and we are in the process of finally providing this to the industry. So these are few technologies on which we are extensively working on. We are also working for the support system. We are working for the various civil infrastructure projects. There is DRDO project, which is very, very strategic in nature. There we are providing our support. We are also providing our support in the construction of international Navi Mumbai International Airport. So we are providing science and technology intervention for the betterment of society. That is what we are doing on. And this is a platform. The India International Science Festival is a festival wherein we all need to come together to celebrate our accomplishments, to rejuvenate, to re-energize, and with the renewed energy, work towards betterment of the society, betterment of the country. So that is what is India International Science Festival. And I urge the students and research scholars
to actively participate, as well as scientists. Some of the scientists from CSIR-CIMFR surely will be participating. But others, I will be requesting to participate. And those who cannot participate, they must participate through online on YouTube's also. Some of the functions will be available, so you can participate and you can learn what, as a country, we have achieved in the sphere of science and technology, and what we have planned to achieve in the next year or the next few years. So with these words, I once again, I welcome you all, and but in particular to our chief guest, who reached here very late night. I think 12:30 or around 1 o'clock in the midnight he could arrive, and then again in the morning is ready. So we are really, really thankful to you, sir, for accepting our invitation and being with us. Thank you very much. And I welcome all of you, and particularly to the students, those who have come in, because I know the kind of academic load and the curriculum load or pressure you do have, but you have come in here. I wish you a great day today. You visit the lab, you interact with the scientists, and whatever curiosity you do have, you do try to be open, asking questions, and I can see that in the brightened eyes of so many students, there will be few scientists who will be upcoming scientists, and those scientists will be our next missile man, and next scientists, those who will be providing us modular nuclear reactors, which will be providing renewable energy to even small towns and villages. So with these words, thank you very much, and I wish this a great success. Thank you very much. I'm sorry, we have one more eminent guest along with us who could not make it physically, and he is connected online. He is the National Organizing General Secretary of Vigyan Bharati, Dr. Shiv Kumar ji. He is connected online, so I welcome him, and I extend my pranam, my abhinandan to him. And we will be fortunate. He was supposed to be here, but unfortunately he is tied up with his pre-engaged scheduled meetings, as he is the whole Karta Dharta of IASF 2024, and so he is extremely busy. He couldn't make it. He is in Delhi, but we will be fortunate enough to get his blessings on this day. So I welcome him. With these words, thank you very much. Thank you so much for your motivating words, sir. Sir has already described about some of the activities of CSIR-CIMFR, but to have a brief overview about the technologies developed by CSIR-CIMFR, I would like to request CIMFR team to play a video of CSIR-CIMFR technologies. प्रकृति ने झारखंड राज्य को अनुपम सौंदर्य के साथ साथ बहुमूल्य खनिज संपदा से परिपूर्ण होने का भी अखंड सौभाग्य प्रदान किया है। इन खनिज संपदाओं के समुचित उपयोग हेतु तत्कालीन प्रमुख दूरदर्शी विचारकों ने झारखंड स्थित धनबाद में 2 CSIR संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की आधारशिला अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के तत्कालीन माननीय मंत्री
श्री CH भाभा कार्य खनन तथा विद्युत विभाग द्वारा 17 नवंबर 1946 को रखी गई थी। तदुपरांत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा डिगवाडीह धनबाद में 22 अप्रैल 1950 को संस्थान के भवन का उद्घाटन किया गया। इस गौरवमय क्षण में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन, डॉक्टर मेघनाथ साहा, CSIR के पहले निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं अनेकों प्रतिष्ठित अतिथिगण उपस्थित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने उद्बोधन में इस प्रयोगशाला की महत्ता पर बल देते हुए अधिक से अधिक कोयले को वैज्ञानिक पद्धति से कोक में परिवर्तित करने हेतु आह्वान किया। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से कोयले के सभी उत्पादों का समुचित उपयोग हो पाएगा तथा इससे ईंधन उद्योगों और अंततः देश के विकास में सहयोग मिलेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उद्घाटन संबोधन में अनुसंधान के लिए एक सुव्यवस्थित संस्थान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मानव ही है जो विज्ञान का प्रयोग और उपयोग करता है, ईंट और कंक्रीट नहीं, परंतु आधुनिक उपकरणों से युक्त सुंदर कार्यस्थल निश्चित तौर पर विज्ञान को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः विज्ञान की प्रगति हेतु आधुनिक प्रयोगशाला धनबाद में निर्मित करने का निर्णय लिया गया। खनन एवं संरचना संबंधी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु 10 मई 1956 को केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई और धनबाद में एक नए परिसर में कार्य प्रारंभ किया गया। CSIR के दो प्रमुख संस्थानों CFRI एवं CMRI की मूलभूत क्षमताओं को एकीकृत करते हुए 2 अप्रैल 2007 को CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान CSIR CIMFR का गठन किया गया ताकि अन्वेषण, खनन, उपयोगिता और पर्यावरण को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण कोयला आधारित ऊर्जा श्रृंखला के लिए अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा सके। For over 8 decades, the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, has stood as a guardian of India's rich scientific heritage, while advancing in tandem with the nation's modern progress. साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। Over the past decade, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and the dynamic guidance of Honorable Minister for Science and Technology Dr. Jitendra Singh, CSIR has emerged as a key catalyst in driving the Make in India initiative, steering the nation towards self-reliance in every sector. This institution's journey has itself become a kind of a role model for many other institutions which would happen in the times to come. With 37 laboratories across the nation, CSIR is committed to enhancing the lives of Indian citizens through cutting-edge S&T innovations and sustainable solutions. To overcome the day-to-day challenges of life's chessboard, perseverance in science and understanding of technology hold the key to victory. And CSIR are grandmaster in this game. CSIR's visionary initiatives such as the Aroma Mission and the Purple Revolution have turned farming into a lucrative opportunity, empowering even marginal farmers in the most remote and challenging landscapes to thrive and prosper. पहले हम खेती करते थे, मक्की लगाते थे अपने और राजमा वगैरह, उनमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर हमने ये लवाइंडर लगाया, जब से तो हमें बेनिफिट हो रहा है, इसी में हम मस्त हैं सब। CSIR has continuously revolutionized the agricultural landscape, beginning with the introduction of India's first indigenous tractor and made history once again in 2023 by launching India's first compact e-tractor.
For the first time, CSIR-CIMFR has developed a unique women-friendly technology that not only fulfills the requirement of the small farmers, but also empowers the women of the rural India. CSIR has made remarkable strides in making affordable healthcare a reality in India. CSIR played a vital role in developing indigenous vaccines, medicines, diagnostics, and providing rapid solutions. We were so scared during COVID times, but thank God, we got Mama's test results within an hour, and her treatment began immediately. Later, we got to know that this was all possible because of CRISPR-based COVID-19 diagnostic kits developed by CSIR. CSIR has always focused on making a difference in people's lives. While its food technologies have elevated India's food industry to a world standard, these innovations have also brought about significant changes at the community level. ನಾವು CFTR ಇಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ 3,000 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ 6,000 7,000 ತನಕ ನಾವು ಲಾಭನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ CFTR ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. CSIR has made significant achievements in the energy and chemical sectors, including hydrogen fuel cells, lithium-ion and sodium-ion battery technologies, biojet fuel, and the commercial 10,000 tons per annum hydrazine hydrate plant that was dedicated to the nation by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Additionally, CSIR's solid oxide fuel cell technology is set to revolutionize the capabilities of electric vehicles in the near future. We are technology licensee of anaerobic gas lift reactor technology developed by IICT. Apart from this municipal solid waste, vegetable waste, cattle manure and all that, we have also installed a biogas plant based on the technology using slaughterhouse waste. So that is also generating biogas, which is a unique solution. Managing biomedical waste and ensuring its proper disposal has always been a major challenge. To address this, CSIR has introduced an innovative solution through its biomedical waste to soil additives technology, which converts biomedical waste into valuable soil additives. As the world's second largest producer of leather goods, a large segment of India's population thrives on the leather industry. CSIR has played a pivotal role in advancing this sector with groundbreaking innovations. Today, CSIR is at the forefront of developing vegan leather technology and is creating an indigenous footwear sizing system tailored specifically for India. I am eagerly waiting for the Indian footwear sizing system, which is being developed by the CSIR. An efficient and robust road network is the foundation for propelling the nation forward. CSIR has consistently made advanced technologies in the field, and now its steel slag technology is reinforcing India's road construction efforts. I am delighted to say that our collaboration with CSIR-Central Road Research Institute has been a winning solution. They have come up with two innovative technologies: steel slag aggregates and the RejuPave technology for bituminous hot mixes. Throughout its journey of technological innovation, CSIR has also demonstrated its remarkable expertise in the aerospace sector. CSIR's pioneering seaweed farming and processing technology has opened up innovative livelihood opportunities for coastal communities. அது எப்படி நம்மளுக்கு வாழ்வாரம்னா நல்லா நம்மளுக்கு கை கொடுக்குதா, காசுக்கு நல்லா வருமானம் வருமா அப்படின்னு நாங்கள் நினைச்சு வந்து மூங்கில் போட்ட உடனே சரியான விளைஞ்சிருச்சு. From the skies above to the ocean's depths, CSIR's technological advancements have made a significant impact in all realms. I'm extremely happy to inform you that CSIR is now fully committed, geared up to come up with indigenous technologies. Our aim is to stay relevant globally and to help India to become self-reliant. Thank you. Thank you so much.
Now I would like to invite Dr. J.K. Pandey, sir, who is Chief Scientist of CSIR-CIMFR and also Nodal Officer of IISF 2024, to brief the audience about IISF 2024. Sir, please. Thank you very much, Himanshu ji. Namaste. Good morning to all of you. Respected Sri Professor Chaube ji, Chief Guest of today's function, Professor A.K. Mishra, our Director, and off the dais we have Srivastav ji, DAV Principal come ARO, then Mahua Madam, who is a DAV DYD Principal. Then we have a number of other teachers and faculties from different schools, students, and our own colleagues of the CSIR-Central present here in the dais, and all of them who are connected online through MS Team, as well as since the program is live on YouTube, maybe a number of persons from across India or anywhere, they must be seeing it. So to begin with, just giving you a glimpse of the what IISF is. We can understand with the word. There is a word festival in this. The purpose behind that is that science is science को इतना popularize करना है so that it should become a subject of every common person. Every common person, it should celebrate by enjoying it in a fun manner. You can learn the science. इस मतलब एकदम से इतना डिफिकल्ट भी नहीं है साइंस जितना कि होना चाहिए, वो इसका पर्पस है. दैट इज व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस the government is organizing this such a mega event in a festival mode. Second aspect of this is that if you see that every person can find something relevant to him. That means it is such a mega event and covering all aspects that everyone who sees the go through this website will definitely find something which is relevant to him. I like to just before एक मिनट जस्ट शेयर नहीं करिए अभी जस्ट लाइक टू एक नहीं हाँ वेबसाइट हाँ शेयर कर दीजिए. So this is our because in this every program we cannot give everything and all aspects of this such a big program. Well, there is a big website for this dedicated for this purpose, which has been created, and it will just like to show you that how you can open it, how you can register it, how you can go through and find what is relevant for you, and accordingly you can participate, you can register. Like that. So this is a website that is IISF2024.in, and if you go through in this, this is a mission of the IISF 2024, that is a prosperous Bharat in harmony with the modern infrastructure and nature, giving opportunities for all citizens of all regions to reach their potential through science and technology. We can see the IISF journey also. The first event of this IISF, this concept in collaboration of being organized by Ministry of Science and Technology in collaboration with Vijnana Bharati, and to reach each and every people of India. And that is why since India is such a big country, it's not possible to organize at one place and covering all the aspects. Although we try to have maximum participation to the extent possible, but that is why all the events are organized in such a way that the first program, you can see that the first program was organized in 2015 and IIT Delhi. It started with IIT Delhi. This is the 10th version of IISF 2024, which is being organized at
IIT Guwahati in the northeast region. You can see second was organized by CSIR and CSIR NPL. Then third was an IIT Chennai, IIT Madras. Fourth was at Lucknow, IGB Lucknow. Fifth was Science City Calcutta. Sixth was at NISTAD in a virtual mode because that was a COVID peak COVID period. And seventh was at NCPOR Goa. Then ninth was Managed Bhopal. And now this is the 10th version, which is being organized at, eighth was in Managed Bhopal, ninth was in Faridabad, that is RCP campus of the Faridabad, and now it is the 10th version which is being organized at IIT Guwahati. Here you can deep down you can see all these are the number events, all the 24 events which are being organized in this version of the IISF. You can also see that just below that there is a you can click and go through what are the content and how you can participate, what are the programs which are relevant to you or not. And below that you can see that there is a register now. If you find that this program is relevant to you and you can participate, and there is a content where your interest suits, you can definitely plan and then you can register. And after registering, you can see that you will find register page and you have to give your details and other things like that. This is how you can go through the different activities and see the your interest, and accordingly you can start registering, and then you can take part in this program. इसको बंद कर दीजिए स्लाइड. हाँ, स्लाइड में आते हैं. Yeah. I'm just now giving the glimpse of all the 24 programs. You can to begin with, you can see that the organizers of these events are DST, DBT, Ministry of Earth Sciences, Department of Space, DAE, Department of Atomic Energy, and then Vigyan Bharati. These are the organizers, and it's a combined effort to make the science in the form of festival for common people. These Carter Raisers programs have been planned as an outreach activity for this festival in the different part of the country, and this has been planned, and some road shows have also been organized. Just these two are outreach activities for this this IISF festival, and Carter Raisers have been planned from 10th October to 10th November. So today is 11th November. So we are just one day behind the schedule, and in this you can see 24 events have been planned. You can say there is a program of Chandrayaan. The Chandrayaan Museum will also be there in this venue of this IISF and IIT Guwahati, which will be erected and will be available for people from 20th November to 3rd December. The public, the other programs like Science, Technology, Space Expo. This is the exhibition for all the scientific activities and programs that are going in different laboratories and institutions in the country. Then Science Odyssey of the Seven Sisters. Basically, this is the program intended to show the North science from the Northeast state. Then there will be a leaders roundtable that from Ministry, Secretary, and CEO conclave. Then focused conclave of NRF and a new education policy
involving members from Niti Aayog and Science, selected industries, state and central universities, IITs, ISR and NITs, and R&D institutions. Then there will be a global manufacturing summit. You must have noticed that we are now this time we have a special focus on the manufacturing hub in India, converting India into manufacturing hub. Therefore, this one mega event has also been planned for this Make in India, Make for the World Global Manufacturing Summit. Then Student Science Village, where there will be a specific events, project exhibition, interactive demonstrations, science workshop, science parliament, innovative challenges, education expo, ISF Alumni Connect. All those are for particularly focused for the student of the Indian students, particularly school going. Then new frontier for SMT for Viksit Bharat. This will be the content for the AI, ML, and big data, biotech. This is the frontier science that we are doing anywhere in India and abroad. That will be covered and they will be displayed and discussed here in this program. Then empowering women as leaders and innovators. For this, there will be leadership summit, meet the CEO, women innovators conclave, build your network and work-life balance. This program will be mainly focused for empowering women as a leaders. Then S&T hackathon will also be there for problem statement from ministries and then state level screening and 100 ideas. This is obviously for anyone, student, non-student also, who can participate by giving the ideas, and finally 100 ideas will be selected for final and they will be invited and for to participate with all probably most of the time they are all given travel also. Then top 10 finalists will be awarded there in the IISF. Empowering the youth with the young scientist conclave. There will be young scientist conclave also. Then face to face with the new frontier of S&T. Aspiring education and teachers teachers and educators and teachers workshop. The name will be Gurukula, where pedagogical techniques, classroom, particularly this is for teachers training type activity, and innovation, technology and entrepreneurship, where this focused on mission startup. Then remembering Bharat exhibition, then technology showcasing, product demonstration, interactive exhibits, B2B meeting also, networking lounges, science fairs and talks, panel discussion. This will be the part of remembering Bharat exhibition. Then Sagarika, the tale of earth sciences, that is focused on meteorology, oceanography and ecology. And, these are the programs for in this. Then Global S&T Alliance and Science Beyond Our Borders. This global science S&T Alliance will also be a active event where we will have a talk and meetings with the Nobel lectures, then foreign speakers, network sessions, panel discussion. There will be eminent speakers will be called, invited, working in the frontier area, maybe in India, abroad also, and sometimes, most of them, we will have a Nobel laureates also. Then Vaigyanika, the Science Literature Festival. This also is being celebrated, particularly from the with the view to have a activities will be the art of scientific writing, the evolution of scientific thoughts, intersection of science and fiction, science communication in social media, and science communication on Mother Earth. Nuclear energy for self-reliant India, Fusion Forum, the Atomic Assembly. This will be another program. And finally, National Science Organization and Institution Meet. Social Organization and Institutional Meet. Then Science Safari will be focused on
communicating science to wider audience, foster better public understanding of science, improve accuracy and quality of science news. Then there will also be a Northeast food street. This arrangement also will be there to have a taste of different states' food during the participation. Saga of Science Chronicle. These are the glimpse of all the activities which one can see during the ISF 24 at Guwahati, IIT Guwahati. Yeah. But now finally, we would like to have a video here. एक ISF का video we had showing all those things. I would like to do with this. Thank you from my side. Thank you. Thank you so much, sir, for your address and updating us about the IASF 2024. Now, I would like to request Dr. Shiv Kumar Sharma, National Organizing Secretary of Vigyan Bharati, who is also Sangathan Mantri of Vigyan Bharati and PhD in chemistry, to address the audience. Sir is online, so I'd like to request him to address the gathering. Acha. Okay. So moving ahead, now it is my proud privilege to have the opportunity to brief up the biodata of our chief guest, Professor Arvind Chaube, sir. Sir, you are director at NIT Durgapur. Before that, you were Professor HAG at Department of Electronics and Communication Engineering at NIT Jamshedpur. You were also founding director of IIIT Bhagalpur. You have received Dr. Syama Prasad Mukherjee National Eminent Academician Award by Chanakya Foundation in 2019. And your name were published in Who is Who in the World Publisher in November 2009 by USA.
You have more than 38 years of experience in teaching and research, and you have published 2 books, 9 book chapters, and more than 70 papers. You have served as session chairman in some of the important international and national conferences, as well as you have given some of the important keynote lectures. You have developed one of the important software, which is AI-based COVID-19 detection software, which has already been approved by Indian Council of Medical Research. Sir, it is our privilege that you are here with us as our chief guest. So now I would like to request Professor Arvind Chaubey sir for his address. Sir, please. Suprabhat, Johar, good morning to everyone. First of all, I want to thank Director CSIR-CIMFR, Professor Albin Gomez, name is the same, to give the opportunity to say something on this India International Science Festival 2024. On this occasion, on the dais, Dr. J.P. Pandyaji, in front of me, the students of the various schools and the institutions, scientists of this institute, CSIR, CIMFR, and press media. So we all very today interested to know about this and one that is the Mananiya Honorable today Bigan Bharati General Secretary डॉक्टर श्री कुमार शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है. So today this event, before that, Director Mishra ji and J.P. Pandya ji have given the more light on these festivals, science festivals. So the topic of this festival, transforming India into and driven by the S&T, Science and Technology, global manufacturing hub. So before in 2020, India in the manufacturing globe ranking is third, but 2021 India ranking is second, and America was the earlier. It's the second. Now it is the third, and China is the first. So China, India, and then America. This is the position of the manufacturing hub, and that is the global basis ranking. So the theme highlights the role of science and technology in industrial growth and global challenges like climate changes, that is the food security and the sustainable development. These are the major challenges. Our Prime Minister has a great vision to enhance the manufacturing hub through the startup, Make in India, local is vocal, and lastly, all these help to make initiative that is the Atmanirbhar Bharat. So this initiative focuses on in part improving industrial capabilities, fostering innovative and creative world-class
initializations. Some other factors that could help India become a global manufacturing hub include like the collaborations. So business and the government leadership needs to work together to understand the opportunities and the disruption and develop new strategies. A skilled workforce. So manufacturer needs to invest in training and make a skill to up skills of their employees. All and adding more female participation in this manufacturing. Naturally, it will be the this manufacturing hub will be more and more. So cyber securities and the data, the privilege. So this is the new ideas in the manufacturing. The Prime Minister vision, and that is the trust area in the AI and the data science, data mining, blockchain technology. There's the cyber security. These are the trust area, and all global scientists working on these areas. So AI even in the CBSE syllabus in the class 8 onwards, it is introduced. So school boys here. So it is the optional. But I did my PhD in the 2005, and that time when the AI कहीं picture में नहीं था. So I have done the work in the artificial neural net in 2005. Now it is more common AI, and in the future of AI is more and more. So आपको भी इस एरिया में जानना होगा, सीखना होगा. कंपटीशन आना है तो आपको नॉलेज गेन करनी होगी. इससे आप कहीं भी बैठेंगे, गपशप करेंगे, कोई बात अगर एआई का करता है तो आप भी कुछ आपके पास भी मटेरियल हो, काम करें. स्कूल में आप हैं, साइंस एग्जीबिशंस हर एक स्कूल में होते हैं, तो उसमें आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन दैट साइंस एग्जीबिशंस. इससे ये नहीं कि आपको प्राइज मिल रहा है, मीन्स आपके एक अंदर इनोवेटिव आइडिया, एक थिंकिंग आती है कि हमको भी कुछ करना है, प्रयास करना है. आप जो भी एक थिंकिंग के अनुसार एक प्लानिंग करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, सर्किट सिमुलेशन करना, कनेक्शन करना आप सीखते हो. उसके चलते वो काफ़ी एक प्राइमरी स्टेज में उतना ही नेसेसरी काफ़ी होती है आगे जाने के लिए. तो मैंने जब भागलपुर में फाउंडिंग डायरेक्टर थे 2019 में मैं ज्वाइन किया था. 20 में हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया आत्मनिर्भर भारत इस सब होने के लिए. जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग में 4 इयर्स कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर में जब वो समर वैकेशन में वो जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के बाद, तो उनको 1 क्रेडिट कोर्स है, दैट इज द स्टूडेंट इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन का दिया हुआ SSI दिया हुआ है. तो उसमें उनको ये करना है कि हमारे इंस्टीट्यूशन से उनको गाइडलाइंस है कि आप जब भी घर जाओ तो आप आसपास के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो. चाहे वो गांव के बगल में कोई कूड़ा कचरा हो, उसका वेस्ट प्रोडक्ट कैसे मैनेज करें, उसके विषय में कोई थिंकिंग, कोई प्लानिंग करो. कोई जाम है, बड़े शहर में रहता है, ट्रैफिक जाम है, उसका क्या प्लानिंग होगा, कैसे होगा. आप फ्री हैं. आपको जो भी सोचना है एक प्रोजेक्ट बना के लाना है, और जब आप 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, एक PPT प्रेजेंटेशन सभी फैकल्टी के सामने आपको देना है. उसमें जो सिलेक्शन हुआ उसको फिर सेकेंड ईयर में
वो फिर उसका सर्किट सिमुलेशन समथिंग बनाना, उसके लिए कंपोनेंट्स देना, इंस्टीट्यूशन पूरा उनके प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेयर करती है, और वो बनाना शुरू किया है। सेकेंड ईयर में फिर जो काम किए हैं उसका फिर इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन करने के बाद वो स्टार्टअप अप के पैटर्न पर आने लगा। अब उनको थर्ड ईयर में जब आते हैं तो उनको इंडस्ट्री के साथ टाई अप करते हैं कि आप इसको, अगर ये प्रोजेक्ट बना है, नया आइडिया है, तो आप इसको परचेज कर लो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो इनको इनोवेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पर हर एक इंस्टीट्यूशन में आजकल सभी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू बनाते हैं, तो उसके थ्रू वो बच्चे स्टार्टअप करके पैसा भी, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन जनरली 7 to 8% रॉयल्टीज या इक्विटीज परचेज करती है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो भी होगा, जो बनाया उसका वो पूरा पावर होगा। तो ऐसा सुविधाएं हैं। तो ये हमने एक शुरू किया और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बने हैं। और मैं अभी दुर्गापुर में 1 साल से हूँ यहाँ पर। यहाँ भी आने के साथ 1 क्रेडिट कोर्स हमने शुरू किया है, और इस पर भी लोग काम कर रहे हैं। मेन है कि आप स्टूडेंट हो, अभी जो सीट्स इनोवेशन स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत जो भी कहें, मेक इंडिया जो भी बात करें, वो आपको अभी एक बीज आपके अंदर आना चाहिए, एक बीज इसका आइडिया का होना चाहिए। इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है कि कब हम इनोवेशन करें। आप बैठे हो, बैठे बैठे सोचते सोचते एक दिमाग में हंट कर गया, क्या दे दे, ये तो ऐसी दिक्कतें हैं हमारे आसपास में, इसको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, और टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे, क्या करेंगे। तो आप इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं, जैसे आप मान लें कि हमारे NIT दुर्गापुर में है, या किसी इंस्टीट्यूशन में नियर बाय इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप उससे ट्रस्ट में जाइए, उससे उनको बोलिए कि हमको मदद करें, इस एरिया में हमको कैसे इसको डेवलप करना है। क्योंकि आजकल जो प्लेसमेंट कंपनी में हो रही हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या IM हो, बच्चे जॉब से अच्छा स्टार्टअप प्रीफर करते हैं। एक मैकेनिकल कलर का है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एक कंप्यूटर का है, तीनों एरिया तीनों मिलकर एक स्टार्टअप किए। कंप्यूटर वाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समथिंग इस तरह का, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो है अपना कंट्रीब्यूशन, कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट बन रहा है उसमें, कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बन रहा है, कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट बन रहा है, और स्टार्टअप बना दिया है। अब आपके जो एक दूसरे के अंदर में वो काम करते हैं, अब वो खुद आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको अभी से ही प्रयास करना है, और काफ़ी आपके अंदर काफ़ी क्षमताएं हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, आमंत्रम अक्षरम नास्ति। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बना हो। नास्ति मूलम न औषधम। ऐसा कोई मूल या वनस्पति नहीं है जिससे औषधि न बना हो। दुर्लभ एक ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई योग्य, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर योग्यता नहीं हो। और योजक अस्तित्व दुर्लभ। योजक अस्तित्व माने कि जो सुपरवाइजर या जो टीचर या जो आपको पहचानने वाले अंदर जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसको पहचानने वाले लोग ही दुर्लभ हैं। तो आपके अंदर अच्छा क्षमताएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 35% पॉपुलेशन जो है, 65% जो पॉपुलेशन है, 35% पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। तो इतनी सारी संख्या आपको, जो जिसका एज 35 हो, इस मीन्स आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है। आपको अनावश्यक जो समय बिता देते हो इस तरह गपशप में, जनरली आपको थिंकिंग जो है आपको पॉजिटिव रखना होगा। क्योंकि जब थिंकिंग आप पॉजिटिव रखोगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार से आप उसके लिए कोशिश करेंगे, और कोशिश करने से कुछ होता ही है। हर एक कोशिश में सफलता नहीं मिलती,
लेकिन हर एक सफलता के पीछे कोशिश ही होता है। तो इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए और कोशिश करने से ही कुछ कुछ मिलता है। आपको जो 1-2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, जितने भी आप नामी लोगों के नाम सुनते हैं, साइंटिस्ट का समथिंग, आपको 1-2 बार, 5 बार, 10 बार में उनको सफलता नहीं मिली है। लैब एक्सपेरिमेंट कितने बार लैब एक्सपेरिमेंट किए, हमें अनसक्सेसफुल रहे, बाद में उनको सफलता आई उनको। तो आपको एक तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और संगत अच्छा रहेगा तो आपके विचार अच्छे रहेंगे और आपके वैल्यू भी नेचुरल विचार अच्छे रहेंगे तो आपका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि एक जो कहावत है कि बनिया जो सेल्समैन है, बनिया का बादाम जो होता है, सोना के कचरा जो है बनिया के बादाम से हमेशा महंगा मिलता है। सोना का कचरा में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सोना मीन्स जो गोल्डमैन है। तो इसलिए कि सोना डायमंड काफ़ी कॉस्टली है और उसका एक छोटा सा पार्ट भी बादाम से महंगा है। तो अगर आप अच्छे लोगों के संसर्ग में रहे तो आपकी थिंकिंग अच्छा है तो नेचुरली आपका कुछ ना कुछ इनिशिएटिव अंदर भावना आएगी, हमें कुछ करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि सत्संग का क्या असर है। एक चाय घर में आप फ्री में पीते हो, जब आप मोहल्ले चौक पे जाते हो तो 10 रुपये मिलता है, जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो उसका दाम 80 रुपया 100 रुपये हो जाता है, जब फ्लाइट में चले जाते हो उसकी कीमत 150 होती है, जब 5 स्टार होटल में जाते हो तो 400 के आसपास हो जाती है। चाय तो वही है, मसाला चाय। और लेकिन सत्संग मीन्स स्टेज बदल गया, जगह बदल गई, उसका वैल्यू बढ़ गया, आदमी वही है। तो आपको भी वही बनना है। जब भी आप किसी एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी जितने हमारे यहाँ पर डायरेक्टर्स आप देख रहे हैं वो स्टूडेंट लाइफ आपकी स्टेज में ही बढ़ते हुए धक्का खाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। जो जितना धक्का खाया वो ज़्यादा ऊपर गया। तो आपको भी साथ में मिलेंगे, आपके रूममेट होंगे, वो बोलेंगे कि थोड़ा सा पी लो ना, एक बार पीने में क्या लगता है यार, ठीक है। तो साथ में ऑफर करेंगे तो आप पी लिए तो अभी उन्हीं के साथ फिर चले गए, बोले नहीं तुम जब पीते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, तुम पियो हम देखते हैं। तो नेचुरली उनके साथ तो झगड़ा कर नहीं सकते, रूममेट है तो आप उनके साथ नहीं रहते हो भी नहीं साथ में, तो संपर्क तो आते रहेंगे लोग, लेकिन उससे आप कैसे बच के आगे निकल रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ में जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में जेपी पांडे साहब ने जो कहा, एक कोरोना सॉफ्टवेयर की कोरोना की बात, वो 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ उसकी जैसे थोड़ा सा कहानी कैसे हम लोग उसको सोचिए कैसे किए कि 2020 में 22 या 24 मार्च को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना लॉकडाउन के लिए अनाउंस किया। उसमें डायरेक्टर थे तो डायरेक्टर्स लेवल में मिनिस्ट्री से लेटर आया कि सभी डायरेक्टर्स को आदेश दिया जाता है कि आप कोरोना के बचाव के लिए आप क्या रिसर्च कर सकते हैं करो। तो सभी जो जैसा था, कोई किट बनाने लगा, कोई मास्क बनाने लगा, कुछ करने लगा। हमने जो चाइना में और यूरोपियन कंट्री में कोरोना पहले ही फैल चुका था तो उसके जो जर्नल्स थे हमने उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मालूम हुआ कि कोरोना जब शुरू होता है तो लंग्स को अफेक्ट करता है, 2-3 दिन के अंदर में लंग्स अफेक्ट करता था। आप उस समय देखते ही थे, 2-3 दिन बुखार हुआ, खांसी हुआ, उसके बाद लंग्स अफेक्ट हो गया। RT-PCR आप जांच कराए, उसका रिपोर्ट 50 दिन के बाद आता था, तब तक वो आदमी ICU में भर्ती हुआ, देहांत हो गई। तो मैं अपने जो फैकल्टी था वो IT पटना से ही था, उसको जस्ट अपॉइंट किए थे तो उसको हमने बुलाया। AI में वो भी काम करता था, मेरा भी फील्ड AI था। तो हमने कहा कि ये टेक्निक करके इसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करो, एक
नया सिस्टम डेवलप करो, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में 2 ही जांच थे, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट का 50-50% था, RT-PCR कुछ भरोसेमंद था, लेकिन हम लोग नज़र में भरोसा नहीं था, इसलिए कि RT-PCR में जो ICMR का रिपोर्ट है उसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 2 पैरामीटर्स होते हैं। सेंसिटिविटी उस पैरामीटर्स को बोलते हैं कि अगर 100 आदमी कोरोना से ग्रसित है और उसका जांच करें, कंफर्म ही कोरोना है और उसका जांच करें, तो 70% को ही पॉजिटिव बताएगा, मीन्स कोरोना को कोरोना बताएगा, 30% नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसके माने कि वो आदमी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है और दूसरे को फैला रहा है। लेकिन हम ये जानते थे कि अगर कोरोना का RT-PCR जांच हो गया तो ये फाइनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस केस में हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उस केस में मेरा 98% था, जो इनका 70% था। फिर एक स्पेसिफिसिटी पैरामीटर्स, जो 100 लोगों को अगर नॉर्मल हैं, उनको कोरोना है ही नहीं और उनका कोरोना की जांच हो, तो RT-PCR में 99% जो रेट दिया हुआ है कि इतना सही बताएगा, माने जो नॉर्मल है नॉर्मल को नॉर्मल बताएगा, 1% गलत हो सकती है। मेरे केस में 98.6% है। तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। सॉफ्टवेयर उस समय इंडिया का मेरे पास एक्सरे नहीं था, फिर विदेशों से हमने एक्सरे कंसल्ट किया, डाटा लिया, वहाँ से करीब 10-15 हज़ार को AI से ट्रेनिंग कराया, टेस्टिंग कराया। फिर मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाता था, फिर CDEC का जो डायरेक्टर था वो मेरा मित्र था, फिर हमने उससे कंसल्ट किया, फिर उनका जो सुपर कंप्यूटर है उसको एक्सेस लिए, उसके साथ फिर उसका कम्यूटेशन किए, तो सक्सेस होने के बाद फिर हमारे बिहार के ही एक मिनिस्टर थे, अश्विनी चौबे जी, वो MOS हेल्थ मिनिस्टर थे, उनसे कंसल्ट किए कि हम इंडियन पेशेंट पर इसको लागू करना चाहते हैं। फिर उन्होंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को अथाइज किया, वहाँ पर हमने जांच किया, वहाँ पर रिपोर्ट आया। फिर हमने कहा कि ठीक है, इसको ICMR में भेजते हैं। ICMR में भेजे। डॉक्टर भार्गवा, प्रोफेसर भार्गवा जो थे वो एम्स में डॉक्टर थे, लेकिन उस समय वो डायरेक्टर जनरल थे ICMR के। उन्होंने फ़ोन किया हमको कि इसका जांच हम नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका AI बेस्ड आप सिस्टम बनाए हैं, जो कंप्यूटर फील्ड में हम काम नहीं करते हैं, वो लोग बायो समथिंग इस तरह में काम करते हैं। फिर हमने मिनिस्ट्री में खबर किया, मिनिस्ट्री फिर उनको प्रेशर डाला, फिर वो एग्री किए। एग्री करने के बाद उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी बना देते हैं। फिर उन्हें एम्स के डायरेक्टर जो गुलरिया साहब थे उसको उन्होंने चेयरमैन बना दिया। PGIR के डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स थे, कमेटी बन गई, हम भी उसमें मेंबर थे। तो लास्ट में एम्स पटना को अथाइज किया गया कि ये हमको सॉफ्टवेयर देंगे, मीन्स एक्सरे देंगे, जो जिसको कोरोना हुआ है उसका एक्सरे, लंग्स का एक्सरे। फिर हमको 1-2 महीना वहाँ लग गया। तो काफ़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, जो कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा काम करोगे तो उसमें समस्याएं आएंगे। समस्या आ रही है तो समझ लो कि अच्छा काम हो रहा है। कोई अच्छा काम हो रहा है और उसका लोग नेगेटिव करने लगे तो समझो कि तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है। और काम कर रहे हो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसके माने कि ठीक ठाक नहीं है जी। इसलिए हम लोग तैयार रहते हैं कि RTI हो, कुछ हो, इसके माने कि काम मेरा ठीक ठाक चल रहा है। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, लोग पीछे रहेंगे ही और आपको काम करते जाना है। उसके लिए चिंता ही नहीं करना है। पीछे जहाँ देखे इसके माने कि उतना समय लैग हो गया आपका, और आपको फिर नेगेटिव से उतना फोर्स पॉजिटिव लगाना होगा, तो फिर उसके इक्वल में आओगे, क्योंकि आप तो पीछे चले गए। तो इसलिए सोचना ही नहीं है कौन क्या बोल रहा है। हम लोग भी डायरेक्टर्स लेवल में हैं, आपके भी डायरेक्टर्स होंगे। मैं चैम्बर में जब हम लोग बैठते हैं तो चालू गाते हैं कि सर वो आपके अगेंस्ट में ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला। हम लोग सुन लेते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसा कहा, लेकिन कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं। उसको भी कुछ खबर नहीं होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं। कभी नेगेटिव हम लोग नहीं करते हैं, उसका काम था बोलना उसका। तो इसलिए इसको आप जब भी आप फ्यूचर में रहें, तो फ्यूचर में जो भी आप आगे जाए, तो एक मंत्र यही ले लीजिए कि आपको हमेशा आगे जाते ही है, पीछे नहीं सोचना है। तो फिर हमने पूरा कमेटी ये इवोल्यूशन किया। इवोल्यूशन करने के बाद वो फिर इन्होंने एम्स पटना ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया। मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे वहाँ पे ICMR में,
और ICMR ने फाइनली हमको एक सर्टिफिकेट दिया कि ये वर्ल्ड का पहला जो इंडियन कोई यह है जो आपने डेवलप किया ICMR, जो थर्ड टेस्ट एक लंग्स एक्सरे से भी आप कोरोना की जांच कर सकते हैं, इसके लिए हमने डेवलप किया। हमने हमने एक मैं जब भागलपुर में था तो वहाँ के वाइस चांसलर, बिहार में एक ही कल्चरल यूनिवर्सिटी है, आपको बिहार कल्चरल यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर मेरे चैम्बर में आए, बोले कि चौबे साहब आपको रोज न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ देखते रहते हैं, हम लोग को कुछ हेल्प कीजिए। उनको क्या हेल्प चाहिए? तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो किसान फ़ोन करते रहते हैं कि मेरा पौधा, गेहूँ या धान जो भी हो या सब्जी कीड़े लग गए हैं, सूख रहे हैं, पीले हो रहे हैं, इसका जैसे ही वो बोले वैसे ही साइंटिस्ट का जवाब चला जाना चाहिए। हमने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो किस लैंग्वेज में बात करेगा, वो मैथिली, भोजपुरी क्या यूज़ करेगा, हम उस पर नहीं करेंगे। इमेज प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है मेरा, इमेज प्रोसेसिंग में हम काम करके आपको दे देंगे। फिर हमने एक ऐप डेवलप किया। ऐप डेवलप में अभी भी आप गूगल प्ले में जाओगे तो निरोग, NIROG, निरोग के नाम से है। तो बिहार के एक मिनिस्टर साहब ने उसको इंग्रेशन भी किया उसका। तो उसमें किसान को ऐप दे दिया गया है, वो पूरा बिहार में उसको यूज़ कर रहे हैं। किसान जाता है, धान या गेहूँ अगर पीला या जो भी है, जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसका फोटोग्राफ्स लेता है, वो अपलोड ऑप्शन आता है, अपलोड ऑप्शन आने के साथ वो अपलोड कर दिया सर्वर में या क्लाउड में। हमने जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसको रखा हुआ है, वो उसको जाके एनालाइज करता है। एनालाइज करने के साथ ही हर एक रोग का इमेजेस को हमने ट्रेनिंग दिया है अपने सॉफ्टवेयर को, तो तुरंत उसको अलग कर लेता है। अलग करने के साथ ही आपको जो साइंटिस्ट का जो जवाब है वो पहले से रखा हुआ है, ये रोग, ये जवाब, ये रोग, तो ये जवाब, इतना केमिकल, इतना पानी, इतना घोल, इतना छिड़काव करना है, समथिंग इस तरह जो भी उनका एक बनाया जाता है। वहाँ से लेने के साथ ही उनके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज में करीब 10 से 15 सेकंड के अंदर चला गया। क्योंकि उनको तो पहले दिक्कत होती थी कि कौन सा साइंटिस्ट है, कहाँ बात करे, नहीं, देहात के आदमी पढ़े लिखे नहीं है, दिक्कत होती थी। तो टेक्स्ट मैसेज को पढ़ के किसान कुछ भी उसको अपना, उसके अनुसार अपना रोकथाम करेगा। फिर वाइस चांसलर आए, बोले कि सर ये जो किसान है ना वो हिंदी जो है ना पढ़ नहीं पाता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कुछ सिस्टम और बनाइए। फिर हमने उस टेक्स्ट मैसेज को ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। अब वो प्ले बटन दबा दिया, वो प्ले बटन देगा, वो दिन भर वही कहानी सुन रहा है, उसको याद हो गया कि इस किस्म का अगर रोग हो तो यही करना है। तो इस तरह हमने उनको बोला कि हम फ्री में नहीं करेंगे, हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो 75 लाख रुपीज़ हमको दिए, जो हर एक इंस्टीट्यूशन का नियम है कि 30% इंस्टीट्यूशन, चूँकि हम वहाँ के एम्प्लॉई हैं तो इंस्टीट्यूशन रख लेता है 50%, उसके बाद 75% जो काम करते हैं उनको मिलता है, या 70%। तो फिर कंसल्टेंसी से हमको पैसा मिल गया। ये भी वर्ल्ड में पहली बात था कि कोई भी पहले लोग क्या करते थे कि फोटो लेते थे, उसको फोटो को भेजते थे, जो भी एग्रीकल्चर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जैसे आप एक्सरे कराते हो तो रात में या शाम को डॉक्टर आता है, सुबह का कराएगा, शाम को डॉक्टर आएगा, रिपोर्ट बनाएगा, MRI का, आपका CT स्कैन का, फिर दूसरे तीसरे दिन आपके पास जाएगा। और सही उनको 10-15 दिन लग जाते थे। इस केसेस में वो तुरंत भेजा, तुरंत 10 सेकंड के अंदर में उसके पास में आपको आ गया। तो ये वर्ल्ड में ये भी पहली बार था। अब जर्मनी जो है ये सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो हमने करके करीब 2 साल पहले ही उनको दे दिया है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप अगर कुछ दिमाग में लाओगे और कुछ प्लानिंग करोगे तो उसका उपाय निकलेगा। हर एक प्रॉब्लम का अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। कोई भी प्रॉब्लम आप सोच लिए कि ऐसा हो रहा है, तो हम आप सभी जो फैकल्टी हैं, आप घर के प्रॉब्लम से ही परेशान हैं। हम लोग इंस्टीट्यूशन में 50 टाइप का प्रॉब्लम आता है, डॉक्टर झेलते रहते हैं, तो कभी हम भागते नहीं, इसलिए कि एक्सपीरियंस लोग आए हैं। भारत सरकार ने जो भेजा, सोच के भेजा कि ये जाएंगे तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही रहेगा, तो उसके अनुसार ये समस्या ठीक है, ऐसा कर लो, ये है तो ऐसा कर लो। उन्हीं से सोल्यूशन पूछते हैं कि इससे क्या हो सकता है बताओ। उससे जो बताया अगर अच्छा लगा तो बोलिए ठीक है, इसको हम करवा देते हैं। तो आप प्रॉब्लम लाइए, उस सॉल्यूशन जो है उसका आपको आपके पास नहीं है,
कोशिश कीजिए, कोशिश अगर नहीं है तो फिर जो नियर बाई जो इंस्टीट्यूशन है उनसे कंसल्ट कीजिए और आपको उसका कुछ न कुछ मिल जाएगा। जैसे आज से करीब 8-10 साल पहले इसी से बैठे हुए थे, मैं उस समय NIT जमशेदपुर में फैकल्टी था, तो देखा कि कुहासा के चलते ट्रेन लेट हो रही है। तो कुहासा के चलते ट्रेन लेट हो रही है, अब इसलिए कि सिग्नल नहीं दिखाई देता, विजिबिलिटी 10 फीट 15 फीट 20 फीट की है, वो आपको 500 मीटर से कम नहीं होना चाहिए विजिबिलिटी। अगर राजधानी है तो उसको कम से कम 1 किलोमीटर पहले उसको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, सिग्नल का स्पीड काफ़ी है, ब्रेकिंग होते होते उसको 500 मीटर लग जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमने इसको सोल्यूशन डेवलप किया, सोल्यूशन डेवलप करके और फिर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने हमको 10 मिनट का समय दिया, हम दिल्ली गए, चेयरमैन से बात किए, अपना जो हमने सिस्टम जो बनाया था उसको ले गए, उनको दिखाए, वो 1 घंटा डिस्कशन हुआ 10 मिनट वाला। फिर वो बोले कि चौबे साहब तो बहुत अच्छा है, रेलवे में लगेगा तो बहुत अच्छा है, इसको आप ऐसा करो कि लखनऊ जो RDSO है वहाँ चले जाओ। तो 1 महीने के बाद फिर हम वहाँ गए, वहाँ पर दिल्ली की टीम आई, वहाँ की पूरा टीम थे और हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, काफ़ी सभी पसंद आया। एक सेट जो है वो ड्राइवर के पास रहेगा, एक सेट स्टेशन मास्टर के पास है जो कंट्रोल रूम में लगा हुआ है, वहाँ से जैसे ही सिग्नल ऑन ऑफ करेगा ड्राइवर के पास पहले ही इंफॉर्मेशन चला गया कि आपका सिग्नल आगे वाला जो सिग्नल है वो आपको लाल पीला हरा क्या है वो मालूम हो गया उसको। आपको टेक्स्ट मैसेज भी है, आपको LED लाइट लाल पीला हरा लगा हुआ वो भी है, आपको स्पीकर मोड में भी है, तो सभी सिस्टम हमने बना दिया था। उन्होंने RDSO ने यही कहा कि सर इसको रेलवे में यूज़ करना है तो ये सेफ्टी का रूल है, सेफ्टी रूल में ये सर्किट आपने बनाया इसको आप जांच करा के लाइए, हम पूरे हर जगह रेलवे में इसको लगाएंगे, जांच करेंगे। हम लोग प्रोफेसर आदमी इतने खुश हो गए कि अरे रेलवे लाइन मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको पास कर दिया और पहली बार में ही एक्सेप्ट हो गया, उसको लाए अपने ड्रॉर में खींचे, उसमें रखे, आज तक रखा हुआ है जी, आज तक रखा हुआ है। इसलिए कि अब उसको देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं कि PhD कराएं कि स्टार्टअप करें, लेकिन आप जो भी अगर कोई प्लानिंग हमको आप स्टार्टअप को बताते हो तो उसका हम सोल्यूशन दे देंगे जी, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप लगे रहिए, लगे रहने से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता ही है और पीछे नहीं हटना है। आपको अगर मेस में हॉस्टल में रहते हो तो दाल पतला हो गया, दाल या सब्जी अच्छी नहीं है इसकी शिकायत करने नहीं जाना है, उसी में रह जाओगे तो फिर समस्या ही तुम उसी में व्यस्त रह जाओगे, तुमको नेता बना के लोग आगे कर देंगे। एक बार अपनी कहानी सुनाते हैं, जब मैं स्कूल में था तो सरस्वती पूजा होता था, मैं स्कूल में करीब बात कर रहा हूँ 67-68 की, तो सरस्वती पूजा में 50 पैसे चंदा लगा था, तो चंदा दे दिए 50 पैसा और उसमें जो मास्टर लोग हैं हमको बैर और जो कुछ मिठाई जैसे होता है वो उसको दिए, तो सब खाने लगे। वो लोग अपने लिए खीर बना रहे थे कहीं, तो स्टूडेंट इकट्ठा हुए, बोले कि देखो हम लोग पैसा दिए 50 पैसा और अपने तो खीर खा रहे हैं, हम लोग को दे दिए ये छोटा सा बैर, तो चलो बोलते हैं, वो हमको आगे कर दिया, ठीक है जाके तुम ही बोलना। तो अब देखो बोलना ज़्यादा पहले ही बोलना, हमने आगे हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक लीडरशिप आई, एक ये आगे जाना बात आपके अंदर में एक लीडरशिप की भावना जागृत करती है, मेरा कहना यह था। वहाँ गए मास्टर साहब से बोले कि मास्टर साहब आप लोग खीर खा रहे हैं, हम लोग को बैठ दे दिए, बोला इधर आओ, एक थप्पड़ मारे हमको, आओ यहाँ से। याद है वो घटना यहाँ तक पहुँचाया कि लीडरशिप का क्या फायदा होता है। तो बनी है, लेकिन ठीक है कायदे में रहना है, काम करना है। एक जो कंप्यूटर के लोग हैं एल्गोरिथम्स जानते होंगे, एल्गोरिथम्स क्या होता है, स्टेप 1 2 3 होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को सिखाया जाता है कि स्टेप 1 बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है बहुत लोग जानते भी होंगे। स्टेप 2 बॉस इज रॉन्ग, स्टेप 3 गो टू सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो वो हमेशा बॉस राइट होगा।
तो जो है उनके साथ विरोध नहीं कर सकते, उनके साथ मिल के ही काम कर सकते हैं। ये सब आप ध्यान में रखें, समय की बाध्यता है और हमें भी यहाँ से बैक होके कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर जमशेद में, दुर्गापुर में। तो आप लोगों का एक सोहनलाल द्विवेदी की कविताओं का कुछ अंश जो आप भी जानते होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसके बस 2-3 पंक्तियां ही बताएंगे हम। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर शोभा फिसलती है। और भी पैरा है, हम छोड़ रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जजकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जजकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य ज्ञानवर्धक एवं उत्साहवर्धक उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Now, I would like to request Director Sir to honor our chief guest by presenting shawl and memento. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. P.K. Misra, Senior Principal Scientist of this institute, to present hearty vote of thanks. Sir, please. Good afternoon, everyone. I, Dr. P.K. Misra, deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion. Let me first start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. As William Arthur Ward rightly said, that feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Therefore, to begin, on behalf of CSIR-CIMFR, I would like to thank our chief guest, Professor Arvind Chaubey, Sir, Director NIT Durgapur, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Sir, your presence has boosted our energy and your thoughts have inspired us. Thank you very much for gracing the occasion with your valuable thoughts. Thank you. Next, I would like to thank Dr. Shiv Kumar Sharma, Sir, National Organizing Secretary, Bigyan Bharati, for enlightening us. Your presence has motivated us a lot, sir. Thank you very much, sir. Now, I place on record our gratitude to our beloved and dynamic director, Professor Arvind Kumar Misra, for his generous support for this event. Your encouragement has constantly bolstered all our endeavors, sir. Thank you, sir, for your unstinted support. Next, I would like to thank Dr. J.K. Pandey, Chief Scientist and Nodal Officer for ISF 2024 CSIR-CIMFR, for his continued guidance and support to make the program a grand success. Thank you, sir. On behalf of CSIR-CIMFR,
I would like to thank our honorable guests from various organizations. Sir, your presence has really boosted us and made the occasion a resounding success. My heartfelt thanks to the students, teachers, and principals of various schools for making this function a grand success. Without them, it could not be possible to make it a successful program. Thank you all. I'd like to thank members of various committees for their valuable contributions and relentless efforts for making this occasion a grand success. Thank you all. I would like to thank all scientists, my seniors, colleagues, friends, technical officers, officers from administration, finance and accounts, and purchase, ladies and gentlemen, present in this auditorium and connected with digital mode, whose presence made this event a grand success. Thank you all. Next, I would like to thank press and media who will give a wide coverage of this event. Without them, we cannot explore and present ourselves on societal front. Thank you, press and media. I also thank Dr. Vivek Himanshu, senior scientist, for his fabulous anchoring. Thank you, Vivek. Last but not least, I take this opportunity to express my deepest sense of gratitude and appreciation to all those made this event directly or indirectly a resounding success. Thank you all. Thank you. Thank you so much, sir. We would like to thank you for proposing a hearty vote of thanks. Now we have come to the end of this function. I would like to request all of you to raise in the respect of national anthem. Thank you, sir. Thanks to all of you. Students and teachers are requested to remain seated on their respective seats. And staff members of CSIR-CIMFR, आप लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था है।